program, ATAL Faculty Development Program, organized under the aegis of AICT Training and Learning Academy. It's a day 4, session 8. This FDP is not just an event, but a collective learning journey, a platform where knowledge meets innovation and teaching meets transformation. Today, we have Honorable Speaker of the session, Mr. Avinash Mishra, Sir, Vice President, Godrej Consumer Private Limited. Now may I request Shri Harin Sharma, Sir, to felicitate Mr. Avinash Mishra, Sir. May I request Dr. Professor Jitendra Singh Kirar, Sir, to felicitate Mr. S.K. Gupta, Sir. Now may I request Director, Sir, to felicitate Shri Harin Sharma, Sir. Thank you, sir. Knowledge is the light that forever grows. With every step, a new wisdom flows. Together we learn, together we rise. With respect and warmth, we welcome you with open skies. It's my immense pleasure to introduce the speaker of the session, Mr. Avinash Mishra, sir. Mr. Avinash Mishra is a distinguished leader with over 38 years of experience in HR and IR across industries. He has held senior leadership roles at Godrej Consumer Products Limited, where he has honored with several prestigious awards, including the Best Managed Workforce Award, TPM Award from Japan, and Great Place to Work recognition. Currently, he is the Managing Director of Vikrant University, Gwalior, and also serves as a mentor under the Ministry of Education for IITS, IIMS, and IIITS. Mr. Avinash, sir, is actively associated with many professional bodies, including serving as a national president of the Quality Circle Forum of India. With these vast contributions to HR, quality, and education, having represented India globally, he continues to inspire institutions, industries, and education and students alike. Sir has recently presented his paper on sustainability, the future roadmap of India, at International Quality Conference held in Tokyo, Japan. Ladies and gentlemen, with these, we officially start our ATAL FDP Day 4, Session 8. The technical session will be conducted by Mr. Avinash Mishra, sir. Let us join with enthusiasm and get maximum benefit from this insightful discussion. Please put your hands together and welcome the speaker of the session, Mr. Avinash Mishra, sir. मैं किसी ने लिया था ना ओके सो गुड आफ्टरनून ऑनरेबल हरेन शर्मा जी, श्री गुप्ता जी, डॉक्टर पवन अग्रवाल जी, and all distinguished professors, faculty members, and dear friends. It's my pleasure and honor to be here once again in Sri Ram group of colleges. I have come several times here to interact with the student
faculty members, and most often to meet Harenji and Avinash. And earlier I used to come to meet Chairman Sahab, late Shri Dandotia ji. And I was very fond of him. He loves me a lot. उनके 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 संरक्षण में मैंने अपना करियर उन्होंने देखा था मेरा होल जर्नी ही वाज विटनेस ऑफ माय जर्नी तो ही लव्ड अ लॉट मी एज ए गार्जियन so I think here some professors are also here and some student from which engineering or management कहाँ से हैं आप लोग MBA all are MBA good so good to see you all MBA are sitting here on technical session but I am not a technical person I am a hardcore HR person so but I worked with very technical people and technical I understand the process what kind of process are there in quality management and operation so this faculty development program is very common in all the colleges and universities but the purpose of program is here how we can make aware of latest changes are happening in the real world not only industries I am talking about real world globally that is very much important to understand all the faculty members and those who are sitting here and particularly student also what is happening in and around our country inside our country and what is happening in education line and what is expected from educational institution to deliver a right product to the industry. So, have they connected? My laptop होगा. लैपटॉप तो हाँ मैंने बोला था उधर कितने निकाल तो लीजिए कार से सीधे लाए ना तो वहाँ रहेगा मैंने पीपीटी ऑफिस मुझे दे सकता है पेन ड्राइव तो नहीं है उसी में मैंने कल ही थोड़ा प्रिपेयर किया था First, let me see the PPT. Oh, pen drive. अटल FDP के लगा वीडियो अच्छा ये टोटल अभी तो घर से लेके आया है नहीं मैं निकाल के रखा हो सकता है निकाल के वहाँ पे रख दिया सो एनीवे तो लेट मी
start. I will I will discuss with you without PPT. PPT was only just reference, otherwise everything in my mind. Okay. So I always start with the past is history and future is mystery. Am I correct? And we don't know what is going to happen tomorrow. So it is mystery, totally mystery. So what is left? Present. And so we are living in present. And what is present? Present is nothing but it's the 21st century. Because all the students, they belong to 21st century only. Okay. So we must understand what are the challenges we are facing in 21st century. Okay. Unless we understand the challenge, we cannot come out from these challenges. So what are the challenges? What you see in 21st century? क्या challenges लगते हैं आपको? हाँ? Challenges क्या लगते हैं 21st century? Environment or climate change. Climate change is very climate is getting affected badly by the industry, by the people. Okay, one challenge is absolutely right. और क्या challenges हैं? Peaceful coexistence. Peaceful coexistence. Peaceful coexistence. Geopolitical challenges is also there because the way countries are fighting for their superiority, nothing else, just to show that they are the very powerful country. So they are having a war against Ukraine, and there are so many wars are happening. और क्या है? What are other challenges? New technology is coming up very fast. This is very important. So technological changes are happening very fast. और क्या लग रहा है? Per economic challenges, per capita is a part of your economic challenges. Okay, that is also there. Lack of spiritual knowledge. This is a challenge. Gen Z is follow spirituality. नहीं ना? तो ओके और क्या है? Population. Okay, I'm largely talking about the business context. Okay, what challenges they are affecting to the business. So apart from all these, there are other challenges industries are facing, businesses are facing. First is competition. Cutthroat competition is there, and cutthroat competition making all industries to go beyond their boundaries, compromising with the environment, compromising with the people life. There is no end of. Last month I was in Japan, and this quality conference, one very expert speaker was. I was interacting with him. He told. What I asked him, what is the end of development? Development का क्या end है? कितना growth organization को करना चाहिए? तो he was answerless. सर इसका तो कोई end ही नहीं है. हर organization every year they set the target और उसको achieve करना है. Target every year increase the target. Ultimately what is happening? अभी लोगों ने बताया ना climate से impact आ रहा है. क्यों आ रहा है climate में impact? Because of cutthroat competition. Nobody would like to stop somewhere. There is no end of competition, no end of growth. So what is problem है happening? Climate कैसे affect कर रहा है? उसका reason है. Reason ये है कि हमारी natural resource तो उतनी ही है, land हमारी उतनी ही है, water resource उतनी ही है, air उतनी ही है, natural resources उतनी ही है. लेकिन कंपटीशन में क्या हो रहा है कि सबको लोग नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको मिसयूज करके और वो अपने को दे वांट टू शो, दे वांट टू ग्रो फॉर नो ऑब्जेक्टिव, जस्ट टू शो कि वी आर द नंबर वन, वी आर ग्रोइंग एवरी ईयर, वी आर गेटिंग सो मच प्रॉफिट, वी आर अर्निंग सो मच मिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर, नथिंग एल्स. तो व्हाट द क्लाइमेट इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस ओनली. जलवायु में परिवर्तन क्यों हो रहा है?
परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि हम अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जिसका कि कोई एंड ही नहीं है। लेकिन नेचुरल रिसोर्स की लिमिटेशन है। यू कैन नॉट एक्सपेंड योर लैंड। आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपकी रिवर्स हैं, उसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, वो तो सब स्क्वीज हो रही हैं। तो ये इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन जो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इंडस्ट्रीज हैज टू टेक। दैट इज वाई आपने पढ़ा होगा कि वो SGS जो पैरामीटर्स आए हैं वो क्या है, उसमें सोशल इम्पैक्ट शुड नॉट अफेक्ट द सोशल, इन्वायरमेंटल एंड पीपुल, सोसाइटी। वो एक बहुत बड़ा SGS का आजकल एक बहुत ग्लोबली चल रहा है कि इससे गवर्नेंस भी करना है, सोशल डेवलपमेंट भी करना है, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर ये बिजनेस नहीं करेंगे तो आज से 50 साल बाद आपको नोबडी विल बी एग्जिस्ट, क्योंकि हमने इतना नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया है कि हमारा क्लाइमेट जो अभी आप देख ही रहे हैं, क्लाइमेट में आज तक रेंस हो रही है, अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट है। तो इससे क्या है, सबको इफेक्ट हो रहा है। तो दिस इज वाई सम टाइम कंपटीशन इज ऑल्सो इट्स अ बिग चैलेंज। दूसरा क्या है, जब कंपटीशन है तो कॉस्ट का सबसे ज़्यादा प्रेशर है। कंपटीशन क्यों होता है? कंपटीशन करना है तो आपको कॉस्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, लो कॉस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो बिग चैलेंज फॉर द कंपनी बिजनेसेस, हाउ दे कैन रिड्यूस देयर कॉस्ट फॉर मेकिंग ए गुड प्रोडक्ट। थर्ड जो है मार्केट जो है वो भी बहुत तेजी से डीरेगुलराइज हो रहा है। आप देखते होंगे द वे लॉज चेंजेस होते हैं, गवर्नेंस जो गवर्नमेंट के न्यू स्कीम्स आ रहे हैं, जिससे जो है डीरेगुलराइज बहुत तेजी से हो रहा है। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा जो रीज़न वो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अभी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट AI। व्हाट इज AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देयर इज अ बिग क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वॉट एवर यू आर लर्निंग टुडे, वॉट एवर टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉट ऑफ टूल्स आर देयर, ठीक है ना? तो जो आप वो टूल्स यूज कर रहे हो वो आज एप्लीकेबल है, बट after 6 months, after 1 year, they will not be applicable, because AI also lot of changes are happening very fast. तो आज जो आप सीख रहे हैं AI के टूल, वो आपको आज से 1 साल बाद नहीं मिलेंगे। तो you have to update it yourself. AI is creating a job also, at the same time it is reducing job also. Both things are happening. तो जॉब उनको मिल रहा है जो AI में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहे हैं, और जॉब उनको नहीं मिल, उनका जा रहा है जो जॉब जो है AI करने लगा है। 50% ऑफ जॉब इज हैपनिंग बाय AI इन इंडस्ट्री। तो दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो चेंजिंग वेरी फास्ट। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस का मतलब समझ रहे हैं क्या? ई-कॉमर्स आपने सुना होगा, ई-कॉमर्स, अमेजॉन है ना, फ्लिपकार्ट, पहले ये नहीं थे। अब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर हाउस, नो नीड टू गो एनीवेयर। तो दिस फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, इस मॉडल जो है वो बहुत तेजी से फास्ट हो रहा है। अभी आपने आज पढ़ा होगा न्यूज़पेपर, अगर आपने पढ़ा हो टुडेज न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा था कि मोबाइल इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिडंडेंट आफ्टर सम टाइम। मोबाइल का काम क्या करेगा, कौन करेगा मालूम है आपको? योर स्पेक्स। यहाँ पे चिप होगी और आपका लेंस में आपको एवरीथिंग यू कैन डू इट व्हाट मोबाइल इज डूइंग। कैन यू इमेजिन? दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ AI, मशीन लर्निंग, ठीक है ना? तो ये जब चेंजेस इतनी फास्ट हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। सर वो भी रिसर्च हो रहे हैं,
एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो ये वैलिड पॉइंट, एक्सीडेंट हो गया लेकिन वो यूज करेंगे जब आप कार नहीं चला रहे होंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार भी तो आ गई। हाँ, वो तो विदाउट ड्राइवर कार भी आ गई है, तो एक्सीडेंट तो आवाज जोड़ी है, वो तो टेस्ला लेके आ रहा है विदाउट, कल चल रही है जापान में, मैंने देखा है, यूरोप में देखा है कि और मोस्टली दे आर, इंडिया में नहीं करेगी लेकिन करेगी, अभी जिस तरह से रोड्स और वो हो रहा है, सम प्लेसेस इट विल वर्क। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, दिस विल बी कस्टमाइज्ड विद द इंडियन रोड, ऐसा नहीं है। देखिए यान मस्क जो है ना बहुत आगे, वो इट विल नॉट, ही इज नॉट मेकिंग ओनली फॉर यूरोप और डेवलप्ड कंट्री, ही इज ऑल्सो, व्हाई ही इज पुटिंग अ प्लांट हियर, व्हाई ही केम हियर टू पुट अप हिज प्लांट, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको परमिशन नहीं दी थी, अब देने वाली है, तो ही विल मेक व्हीकल एज पर द लोकल एनवायरमेंट, वो ग्लोबल कंपनी है, ही इज अ ग्लोबल पर्सन ना, तो he cannot survive only providing car to the Europe and other developed countries. He is trying, India is a very big market, okay, so he will try to do it here also. So my point is the way technology is changing, you know, so we have to be very careful, we have to update ourselves, so these are the challenges, and one more challenge is we have a 27 और एवरेज जो है ये यंग पॉपुलेशन, मोर देन 50% इज बिलोंग्स टू इंडिया, जिसकी एवरेज एज अगर अपन देखें 27 ईयर्स, वो 27 ईयर्स के लोग सबसे ज्यादा 50% पॉपुलेशन, मतलब मोर देन 50% इज 27 ईयर्स एज वाले लोग इंडिया में हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, हाउ टू हैंडल यंग यूथ, हाउ टू मेक देम not only employable, how to make them entrepreneur, how to make them good agriculturalist, everybody will not get a job, so this is a big challenge India के लिए, that is also challenge as well as threat also. So question is how we are going to overcome, how businesses are overcoming all these challenges, कैसे कर रहा है, आपको मालूम होगा ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ, कई लोग कोर बिजनेस में फोकस करने लगे, बिजनेसेस, सम बिजनेसेस आर डूइंग री इंजीनियरिंग, अपने कोर बिजनेस री इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं कई लोग एक्विजिशन और एक्विजिशन कर रहे हैं, दूसरे बिजनेस को अपने हायर कर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है बिजनेसेस ओवरकम ऑल दिस चैलेंजेस, ये सब कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई फॉरेन कंपनीज यहाँ है, यहाँ से कई इंडियंस जो है फॉरेन गए, अभी बिकॉज ऑफ ट्रम्प इश्यूज सम रिलेक्टेंसेस देयर, बट स्टिल वी आर कैपेबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ जर्क जो ट्रम्प का मिल रहा है, व्हाई, बिकॉज वी आर ग्रोइंग, वी आर आवर कंट्री इज ग्रोइंग, ओके, सो ये बिजनेसेस जो है बहुत तेजी से चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं, जो है स्टेप्स ले रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई दे आर डूइंग सो, बिकॉज दे वांट टू गेट अ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉफिट, नो बिजनेस इज रन फॉर द चैरिटी, ठीक है ना, लेट अस बी वेरी क्लियर, दे वांट टू सस्टेनेबल ग्रोथ एंड दे वांट टू गेट अ प्रॉफिट, दो ही चीज के लिए बिजनेस चलता है, चैरिटी के लिए नहीं है, ठीक है ना। सो नाउ क्वेश्चन कम, Who runs the business? बिजनेस कौन चलाता है? Who are the drivers? आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप फैकल्टी हैं, आप बिजनेस पढ़ाते होंगे। Who runs the organization? All the? No, I am talking about drivers. कौन बिजनेस, क्या बिजनेस के ड्राइवर्स होते हैं? Let me tell you. हाँ? एंटरप्रेन्योर, ठीक है, नहीं देखिए, एनी बिजनेस इज ड्रिवन बाय 4 ड्राइवर्स। बिजनेस क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं, हाँ ठीक है, बिजनेस इज जो 4 ड्राइवर्स हैं वो पी है, 4 P के नाम से मैं कहता हूं। फर्स्ट इज बिजनेस इज
ड्राइव बाय द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं होगा तो बिजनेस होगा क्या? नहीं होगा। बिजनेस जब प्रोडक्ट बिजनेस में होगा तो वो कैसे चलेगा, कैसे बनेगा प्रोडक्ट? जब तक कि प्रोसेस नहीं होगी। प्रोडक्ट को चलाने के लिए प्रोसेस भी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना? और क्या होगा? प्राइस किसके लिए? ये सब प्राइस, कस्टमर, ये किसके लिए ऑर्गेनाइजेशन करेगा? प्रॉफिट के लिए। तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट, सेकंड इज प्रोसेस, थर्ड इज प्रॉफिट। अब कौन करेगा ये प्रॉफिट? प्रोडक्ट कौन बनाएगा, प्रोसेस कौन चलाएगा, और प्रॉफिट कौन कमाएगा? पीपुल, ठीक है ना? तो 4 बिजनेस के जो ड्राइवर हैं, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रॉफिट एंड पीपुल। तो 4 पी जो है ये बिजनेस ड्राइव करते हैं। बेसिक चीज है, 4 पी ड्राइव द बिजनेसेस। अब वी ऑलवेज से, बीइंग एचआर, गुप्ता जी भी एचआर से हैं, वी ऑलवेज, आपने सुना होगा, पीपुल इज द मोस्ट प्रीसियस एसेट ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है, सुना है आपने? आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए, यू आर मोस्ट प्रीसियस एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Why? Because you are running the organization, you are running your institute. तो विदाउट पीपल प्रोडक्ट बन सकता है क्या? नहीं। विदाउट पीपल प्रोसेस चल सकता है क्या? नहीं। विदाउट पीपल प्रॉफिट नहीं चला सकता ऑर्गेनाइजेशन। तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? पीपल, ठीक है ना? दैट इज वाई पीपल, महात्मा गांधी ने कहा था ना कि कस्टमर इज अवर किंग, ठीक है ना? तो पीपल also customer and supplier both. The people is the most important asset, because you know, in any organization people should be and is a center of any business. Why? Because it is the only sustainable advantage. Others can be replicated by your competitor. That is the power of people. बिल गेट का नाम सुना है आपने? बिल गेट का नाम सुना है? माइक्रोसॉफ्ट के। वो कहते हैं कि यू टेक माई एसेट, लीव माई पीपुल, आई विल ऑल गेट इट बैक इन 6 months. दिस इज द पावर ऑफ पीपुल, ठीक है ना? और जब पीपुल इतना इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वी आर मेकिंग अवर पीपुल. दिस इज द राइट टाइम एंड पॉइंट ऑफ डेवलपिंग पीपुल. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रोल जो है, इट इज गोइंग टू बी ए वेरी डिफरेंशिएटर फॉर एनी बिजनेस, फॉर एनी कंट्री. व्हाट इज आवर ड्रीम? आवर ड्रीम इज टू मेक इंडिया विकसित भारत बाय 2047. 2020, आपने सुना होगा मोदी जी का जो विजन है ना, 2047 में अपने को विकसित भारत बनाना है. तो विकसित भारत बनाने के लिए अगर हमारी ये जैन जी और जो मिलेनियल्स हैं, जो आज बैठे हैं बच्चे, अगर वो डेवलप नहीं होंगे तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ मेकिंग ए विकसित भारत. हियर आवर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू मेक योर स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी, हाउ टू मेक योर स्टूडेंट एज ए ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग. और विकसित भारत की जब कल्पना करते हैं तो बगैर एजुकेशन के, and education, when I say education means quality education, you can't think of Viksit Bharat. That is why NEP came into the place right time to focus on more on practical learning, experiential learning and outcome based learning. This is very important. We have to change the way of teaching used to be here 5 years, 10 years and 30 years ago. You have to change totally mindset to face this kind of challenges. अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि हम स्टिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट श्री राम कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया की बात कर रहा हूँ ओवरऑल. आई यूज टू गो वेरियस इंडस्ट्रीज का तो मैं ही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बहुत जाता रहता हूँ ऑल अक्रॉस इंडिया.
So I find, everybody is asking, sir, how we can bridge the gap between industry and academia. This is a very common question is asked by. तो मैंने कहा, how often you visit industry? Either only factory visit हो जाती है, then we call expert from industries. तो मैंने कहा, this is not going to work. Now, what kind of project you do for the industries? What kind of project industries give to the institutes, colleges and universities को देती है? So this is not happening. So then how a student will become industry relevant? So this is very important. Whatever you are teaching your student, you have to teach more on practical side by giving various projects. Give them a project, let them work, let them form a group, give them a project. आप प्रॉब्लम यही की दीजिए, कॉलेज की प्रॉब्लम से लेट अस स्टार्ट विद कॉलेज प्रॉब्लम, गिव देम एंड लेट देम डिस्कस, लेट देम ब्रेनस्टॉर्म और दे शुड कम अप विद द सॉल्यूशन. उससे क्या होगा, बच्चों का जो है एक्सपोजर बढ़ता है, पर्सपेक्टिव चेंज होता है. व्हेन दे डिस्कस विद अदर, दे डिस्कस विद एक्सपर्ट्स, तो दे गेट अ बेटर आइडिया. एंड लेट मी टेल यू, everybody has got a brilliant idea in his mind, but he is not able to share with to anyone. तो वो आइडिया किसी काम का नहीं. तो what we do in our, I am also associated with Quality Circle Forum of India. हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज से कनेक्ट कैसे हमने किया है. इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम हम लोग क्वालिटी कंसेप्ट जो है इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट करते हैं. उसमें वी गिव लॉट ऑफ सपोर्ट टू द एम्प्लॉइज एंड दे आइडेंटिफाई द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, देन दे फॉर्म ए ग्रुप, दे वी हैव टीच देम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, 12 steps, DMAC, these are all problem solving tool. We have taught them statistical tool, we have taught them problem solving tool. उसके बाद उसको वो फॉलो करते हैं एंड दे मेक ए केस स्टडी, एंड दिस केस स्टडी इज शेयर्ड विद द टॉप मैनेजमेंट एंड दे गेट अ रिकॉग्निशन, दे गेट अ मोटिवेशन एंड दे गेट ए ब्रिलियंट आइडिया फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट. सो दिस इज द वे वी आर डेवलपिंग. अभी व्हाट इज द स्किल्स रिक्वायर्ड इन टुडे सिनेरियो? आपको क्या लगता है, क्या स्किल की जरूरत है सीखने की बच्चों को? दे शुड बी प्रॉब्लम सॉल्वर, एजाइल, रेजिलियंट, फ्लेक्सिबल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिवनेस, वर्सेटाइल. ये सब स्किल की रिक्वायरमेंट है in today's scenario. So how you will develop your skill unless you involve yourself in project? You take real world problem, solve, apply your mind, use all the inputs. आजकल तो बहुत कुछ AI से आप, आजकल तो ये हो गया है कि आप कोई भी प्रॉब्लम डालो उसका सोल्यूशन आपको AI में मिल जाएगा. But is it going to help you? Is it going to help your skill, develop your skill? No. मैंने कई केसेस देखे हैं. व्हेन आई डू इंटरव्यू, आई हैव 10,000 से ज़्यादा इंटरव्यू मैंने किए होंगे अपनी लाइफ में. अभी रिसेंटली वी हैव हैड an interview 2 years back before my retirement. We have called some student from IIT Kharagpur and we have given them problem. This is our problem statement. You have to solve and give us your feedback. तो उन्होंने फटाफट AI में डाला, AI से उन्होंने बना के पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास एक रिपोर्ट दी. सर दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So then we go into deep and we wanted to understand what is the process you have followed and each process what you did.
So they were not able to answer. So this kind of learning is not relevant. It can help you to understand the process and other thing, but ultimately, unless you apply your mind, it is very difficult. तो AI का टूल जो है आपको उतना ही यूज करना है जितना कि आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग तो यू कैन डू एट योर स्पॉट ओनली. दिस इज द वे वी कैन डेवलप अवर स्किल. ओके, सो my point is not to use technology. My point is how to use the technology. It should not happen. Your skill is not developing, only knowledge you are developing. Yours knowledge is very important, but how to make it applicable in your workplace, that is more important. Then only you can develop. Particularly जो management के student बैठे हैं उनके लिए it is very important to understand, to develop such kind of skill. Okay, so this is one part. Another part is very important for technology. Have you heard innovation? What is innovation? Finding a solution to something with technology, something new, Something new, simpler. something unique. Okay. Applying novel approaches to modify, or you can say optimize the already existing systems or the processes of the. Okay. So my point is, how we can define innovation. Innovation, if you are creating a value for your customer, Adding value to something. creating and adding value to your customer, which he or she has not experienced earlier. Okay, so that is called innovation. Okay, so this is and this is applicable everywhere. Innovation is very important, because the way customer behavior is changing. Unless you give them an innovative product, innovative feeling, innovative value addition, you cannot survive for a longer period of time. So this is very important for understand what is innovation. And innovation is applicable in your pedagogy, जो अपन academic line में बोलते हैं ना pedagogy. So that is a part of your pedagogy. How you can make your pedagogy transformative. कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी पेडागॉजी को जो कि अभी तक अपन फॉलो कर रहे थे. हाउ वी कैन डू इट? यू हैव टू अडॉप्ट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन योर वे ऑफ टीचिंग, which students should feel they are getting something new, because whatever available in the curriculum that everybody knows and they can get from Google or anything. तो होता है कि नहीं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बच्चे भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं. If you are teaching something, definitely they will go and see the Google. It is very easily to get whatever to be better than your knowledge. So that is available. But what is the innovative way of teaching? If you add on something new for the student, they will listen, they will learn, and they will be more curious to know something more from. So innovative teaching, innovative way of teaching is very important in educational field also. How we can make them more learning oriented rather than knowledge oriented. This is very important. And for a student also, you can get knowledge from everywhere. Knowledge की कोई कमी नहीं है, बहुत अवेलेबल है knowledge. Now how you can apply in your job, in your work, that is more important
Okay. So now my point is, there is number of avenues are available for developing your skill, your knowledge, and your wisdom. So whatever you do, only two things work: passion and perseverance. Knowledge, you can equip with your knowledge in your college or university, but it is your wisdom which make you successful. So passion and perseverance is very, very important for you to make it different from others. Okay. For a student, because all students are management student here, for you one, I would like to give one input. Have you gone हाईवे में गए हैं आप लोग? अगर ग्वालियर से दिल्ली जाना हो तो कैन यू गो डायरेक्टली विदाउट एनी ब्रेक? तो इफ यू रीच टू डेस्टिनेशन दिल्ली, तो व्हाट यू हैव टू स्टॉप एट द टोल टैक्स. रुकना पड़ता है ना. टोल टैक्स में क्या होता है? यू हैव टू पे मनी, then only you will go to the next hotel, then ultimately you will reach your destination. And career is like that only. In each stage you have to pay a price in terms of knowledge, skill, experience. Then only you can go to the next toll tax, next, and ultimately you will reach to the destination. So career is like a highway. Okay, if you want to start, if you want to run in the highway, you have to pay a price in each stage. Okay, otherwise you cannot reach your destination. Am I correct? क्यों बच्चों? है ना? तो आपको you have to update yourself in each stage, each position, each level. Then only you can reach your destination, whatever you have dreamed. Okay, so this is one thing. Another thing, what we expect as a corporate from the educational institute, from the student, that is also very important to understand. We want to see, we are not worried about their knowledge and your domain knowledge and everything. We are only worried about your attitude. Because knowledge and skill we can develop. Corporate can develop your knowledge and they will make you valuable for the organization. But only attitude makes a difference. If you are not having a positive attitude, not having a ability to learn, humble to learn, that is very different. That is very difficult to get a job. Attitude is very important accessories for your career. Okay, so that is very, very important accessory. So this is why I am saying, because it's a mixed group. Student is also here, faculty is also there, and they are responsible for making you ready for job placement. Ultimately you want all placement ना, तो प्लेसमेंट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. प्लेसमेंट अगर अच्छी कंपनी में आप चाहते हो तो कैसे करोगे प्लेसमेंट? यू हैव टू डेवलप, you have to be prepared for this, and for that faculty role is very, very important. You have to be more practical rather than theoretical. Okay, so I will not take much time, but if you have any question, please you can ask me, because this should not be a one way. If you have any query, any question, you can ask. सर, जैसे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स अगर चाहिए तो किस डायरेक्शन में अप्रोच करना पड़ेगा? This is a very good point.
देखिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है अभी, बिकॉज आई ऑल्सो associated with Vikrant University 6 months back. I have not good idea about the academic, but I am enjoying. So abhi we have launched the one hackathon. Hackathon, it's an event competition. We have uh, got around 150 problems from various industries across India, and this problem will be solved by student only with the help of their mentor. So real world problem we have got it, and we have sent to your college also to participate in this event. And this problem is a real world problem. You have to apply all the technology, whatever you have, AI and machine learning, data science, analytics, and whatever robotics and automation. You have to make a solution for this problem, and this problem will be evaluated by the industry and education both jury, and next 10 or 15 team we will invite them and we will give them a 24 hours to bring a best solution of this problem, and this prize is 1 lakh rupees to the first winner, second 75,000 and third is 50,000. So this is the approach we can adopt to get a real world problem from the industry and give it to your student. They will apply their mind and they will come up with the solution. And if solution is very appropriate, then they will get the prize. So this is one way of getting real world problem from the industry. And industries will also get benefited because they get a fresh idea, fresh perspective from the student. Those who are more computer savvy, technology savvy, if they get a good solution, the company is also interested to give them a real world problem. Otherwise, it is very difficult. Why they will give to the student? Most of the companies don't want to share their problem. But we got it through our resources. So this is what real world problem you can get it. And still I told Pawanji and Harenji and Avinashji, you should nominate, you should register. If MBA students also they can get registered. Engineering student also can get registered. And you come, you put up your solution. We will see. दास जी आप मिक्स हैं आपका एक्चुअली एकेडमिक पहले 4 में भी रहे और आप कह रहे हैं 6 महीने बट यू हैव मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट No, sir, I am also learning. I am also learning, sir. Gupta ji, because this is my passion, because I have developed in 40 years only people development. People was my passion. उनको डेवलप करना, उनको शेप में लाना और इंडस्ट्री ऑलवेज रेलेवेंट बनाना, दिस इज माय पैशन. So I thought, let me do something for the student, and let me openly tell you, here our students are very ordinary. Okay, and my purpose of joining academic line and sharing experience is how we can make ordinary from ordinary to extraordinary. This is my tagline, and what I am doing for that only. How we can make our students from ordinary to extraordinary. That is I did in my organization. I have taken ITIs, 10th, 12th pass workers and diploma holders, and we have made them a manager. So this is the satisfaction level of any HR guy. If you are genuinely interested to developing your people, you have to create an ecosystem where they can develop and they can be reach the position. Everybody has got a talent. Problem is nobody is going to unleash your talent. Nobody has got time to bring your talent into the right place. This is a gap in industries also, in education also. Gupta ji, you must be aware, when we hire any fresh engineers or any management student, we send them for the assessment center. And in assessment center,
we identify the gap, what is expected from the industry and what is having this student in current scenario. Psychometric test, or we have a well-designed assessment center also. So psychometric test is for behavioral side. I am also talking in technical side also. So assessment center, say we come to know ki what is the gap, and if gap is, we find the gap, then we provide the right input to the freshers to make them an industry relevant. Why not is happening in education center? Why it is not happening? When we बच्चा 12th से पास होके आता है, अगर हम उसका असेसमेंट सेंटर फर्स्ट ईयर में करें कि व्हाट इज हिज इंटरेस्ट, व्हाट इज हिज कैपेबिलिटी एंड वेयर वी हैव टू ब्रिंग देम, व्हेन ही यहाँ से 4th ईयर में जब बच्चा छोड़ के जाएगा या MBA का 2nd ईयर में छोड़ के जाएगा, तो इफ वी आर एबल टू फुलफिल दिस गैप, तो योर स्टूडेंट will always be an industry ready student. But this is not happening, and this is because of this only. जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो वहां जाके ना जाके वो वहां जाता है जहां भीड़ जा रही है, तो वहां पे वो फेल हो जाता है. क्यों? क्योंकि जिसका उसकी स्ट्रेंथ है वो उसको नहीं डेवलप कर पाया, वो उसको डेवलप किया कि मेरा साथी कहाँ गया, मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, लेकिन मैं क्या हूं वो अपने को नहीं पहचान पाया, तो वो सक्सेस ज़्यादा नहीं हो पाता. अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को फर्स्ट ईयर में हम पहचान जाए कि दिस इज माई स्ट्रेंथ, दिस इज माई गुड एरिया, आई शुड डेवलप माई सेल्फ इन दिस एरिया, उसके लिए आपको एक असेसमेंट सेंटर डेवलप करना चाहिए जिसमें कि हम बच्चों को एसेस कर सकें. एंड दिस इज द राइट वे टू डेवलपिंग स्टूडेंट फॉर द राइट प्लेस. This is what I am going to experiment in my university. The way corporate is working, why not we should have the same system here? Corporate में जब जाते हैं बच्चे तो 1 साल की ट्रेनिंग के लिए रखे जाते हैं. Why 1 year training is required? If we develop them here at education center, so no need to have a 1 year training. They can be directly absorbed. But for that, collaboration is very important. Industry should tell, yeah, I want this kind of skill. You should also able to provide this kind of skill. Then only possible. तो इसमें क्या होगा, इंडस्ट्रीज को भी 1 महीने का 1 साल का सेविंग होती है, उनका भी टाइम और मनी जाती है. एट द सेम टाइम स्टूडेंट विल ऑल्सो गेट द इमीडिएट जॉब. तो दिस इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक, एवरीबडी हैज गॉट अ टैलेंट, हाउ टू मेक ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ठीक है ना, ये मेरा पर्पज है एकेडमिक लाइन ज्वाइन का. और हमने आई हैव एक्सपेरिमेंटेड इन माय गोडरेज ऑर्गेनाइजेशन. आई हैव फर्मली बिलीव दिस इज पॉसिबल अनलेस you have a proper process, proper system in place. So this is what I am experimenting. Still I am in a learning mode. I have no idea about academic, lekin I am very much curious to understand what kind of system works in our in education line. This is my, any question? कैंपस देखिए मैडम, देखिए कैंपस सिलेक्शन और इंटरव्यू के लिए हम बच्चे केवल प्लेसमेंट के लिए बात कर रही है ना. हाँ, तो प्लेसमेंट इज ऑल डिपेंड ऑन इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज. ठीक है ना, अगर ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में जा रही हैं तो डिफरेंट स्किल सेट इज रिक्वायर्ड, डिफरेंट नॉलेज इज रिक्वायर्ड. इफ दे आर गोइंग टू मार्केटिंग सर्विस इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं तो अलग स्किल सेट लगता है. आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं तो अलग स्किल सेट लगता है. एंड मोस्टली जो बच्चे हैं वो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि मार्केटिंग उनको लगता है कि बहुत इजी जॉब है, बट इट इज़ द मोस्ट टफेस्ट जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. मार्केटिंग का अगर स्किल नहीं है, मार्केटिंग का आप एक मार्केटिंग का एक अलग बिहेवियर होता है. ठीक है ना, सेल्स का एक अलग बिहेवियर होता है जिसको आपको डेवलप करना पड़ता है. लोगों को बड़ा लगता है कि यार मार्केटिंग में मैं चला गया तो मतलब मैं आई विल अर्न मोर देन 50,000 1 लाख रुपीज. इट इज नॉट
देयर। मार्केटिंग में आपको कौन है जो मार्केटिंग में जाना चाहता है? नो व्हाट इज देयर? देखो मैडम, हाँ प्लीज स्टैंड अप। क्या मतलब समझते हो आप? मार्केटिंग का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में? क्या? नहीं, मार्केटिंग का रोल क्या होता है? मार्केटिंग का रोल, जब सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों अलग है, डिफरेंट रोल होता है। सेल्स इज डिफरेंट, मार्केटिंग इज डिफरेंट। Sir, to advertise their products, technologies, and to introduce their new things of their organizations. देखिए, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि वी आर नॉट able to understand what is the marketing, what is sales, what is HR. This is the biggest problem in our student. हम ये देख के चले जाते हैं हमको मार्केटिंग में जाना है, दिस इज वेरी इजी, ग्लैमर है उसमें, तो ग्लैमर चाप के हम चल दिए। ऐसा नहीं होता है। अगर हम में वो कैपेबिलिटी नहीं है मार्केटिंग की, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केटिंग, वी शुड फॉरगेट अबाउट दिस। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे आप जो भी एडवर्टीजमेंट इज ए वन पार्ट ऑफ हाउ टू मेक योर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, हाउ टू मेक ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट टू द सोसाइटी या कंज्यूमर को कैसे आप, मार्केटिंग का काम ये है। मार्केटिंग आपका डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, आपका रैप जो यूज होता है, पैकेजिंग, वो कैसे सोशल मीडिया में, कैसे एडवर्टाइजिंग में उसको प्रोजेक्ट करना है, कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को पहचान के उसको मार्केटिंग के लिए के हिसाब से प्रोडक्ट को बनवाना है। कंज्यूमर का बिहेवियर जानना है तो मार्केटिंग का स्किल आप कर सकते हो। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, तो यू कांट डू मार्केटिंग। नॉर्मली लोग समझते हैं कि सेल्स हमने अगर बेचना है तो ये मार्केटिंग हो गया, और सेल्स का क्या जॉब है, रोल है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉर द स्टूडेंट एंड फैकल्टी टू, इफ दे आर नॉट एबल टू and explain what is marketing and sales, how they can make their career in this field. This is the biggest problem. सेल्स का रोल जो है, जो भी मार्केटिंग ने प्रोडक्ट डिजाइन करके लॉन्च किया है उसको बेचना नहीं है, उसको एंड ऑफ का जो रिटेलर होता है उस तक पहुंचाना, ठीक है ना, और रिप्लेनिश करना। क्योंकि सेल्समैन जो होते हैं, आपने देखा होगा, वो एक खराब भी चीज जो है अच्छा बना के बेच लेते हैं, वो भी एक नेक है, ठीक है ना, आप ही को 500 में बेच 5 दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन अब ये भी सब खत्म हो रहा है, क्योंकि जब ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, ऑनलाइन डिलीवरी में क्या हो रहा है, सेल्समैन की जरूरत है क्या, उन्हें डिलीवरी बॉय की जरूरत है। आप कुछ भी करो, अमेजोन में डालो, आपके घर में आ जाएगा। मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर, हाउ दे मार्केट देयर प्रोडक्ट, व्हाट इज द यूएसपी बताते हैं मार्केटिंग वाले, अपने प्रोडक्ट को कैसे विजिबल बनाते हैं, दैट इज द रोल ऑफ मार्केटिंग। सेल्स का रोल तो अब ऑनलाइन जब से आ गया है तब से खत्म होता जा रहा है, बहुत कम है। बट ओनली थिंग यू हैव टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल इन द शॉप, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट जॉब फॉर देम, ठीक है ना। तो कैंपस के लिए मैडम आपने बोला बच्चों को कैसे था, तो एक तो पहला यही है कि पहले उनको अपने डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नॉलेज नहीं है तो दे कैन नॉट, दे विल बी मोर अनकंफर्टेबल। सेकंड, आपको स्टडी करनी चाहिए किस कंपनी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। अगर आप एफएमसीजी के लिए कर रहे हैं, उस
कंपनी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर कंपनी का अलग रिक्वायरमेंट होती है। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल, आप ये मत सोचिए कि हम इंटरव्यू में फेल हो गए। इंटरव्यू में फेल कोई नहीं होता है। आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि कंपनी की रिक्वायरमेंट दूसरी थी, मेरी जो है स्किल उसके हिसाब से नहीं फिट हो पाई, ठीक है ना। कभी दिमाग में मत लाइए कि मैं फेल हो गया या मेरे में कमी थी इसलिए कंपनी ने मेरे को नहीं लिया। कंपनी इज वेरी चूजी, कंपनी बहुत चूजी होती है। वो अपने ही हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप क्लास में नंबर 1 है तो आपको हर कंपनी ले लेगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी ऑलवेज गोज बाय देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट है। किसी भी बच्चे को निराश नहीं होना चाहिए कि मेरा इस कंपनी में नहीं हुआ, मेरे दोस्त का हो गया। ईच स्टूडेंट हैज गॉट अ डिफरेंट स्किल, डिफरेंट नॉलेज। वो कंपनी का लुकआउट होता है कि उसको क्या चाहिए। वो आपके हो सकते हैं जो सबसे थर्ड क्लास हो, जिसकी रैंक सबसे कम हो, उसको हायर कर ले, क्योंकि दे वांट दिस काइंड ऑफ स्किल सेट। तो दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। आप मैंने देखा कई बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं कि यार हमारा नहीं हुआ, उसका हो गया। तो दिस इज नॉट योर फेल्योर, दिस इज यू आर नॉट फिटिंग फॉर दैट रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो दूसरा आप ये अपने दिमाग में रखिए। तीसरा जो है, आपका कंपनी में जो फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है, वो हमेशा आपसे पूछते हैं टेल अस अबाउट योर सेल्फ। दिस इज द बिगनिंग पॉइंट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में बताइए। हम क्या देखते हैं, लोग रटे रहते हैं। रट का बिल्कुल वो समझ में आ जाता है कि ये रट के आया है कि दिल से बता रहा है। 90% जो बच्चे हैं वो रट लेते हैं कि यार ये पूछेंगे और हमको ये बताना ही है, और फिर वो स्ट्रगल करते हैं एक्सप्लेन करने में। अरे भाई, अपने बारे में बताना है तो हमसे अच्छा कौन जानता है। तो वाई वी वांट टू गिव योर रॉन्ग इंप्रेशन। जरूरी थोड़ी है कि आपसे वो कहेगा कि नहीं इंग्लिश में ही बोलो। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में ले रहे हैं तो हमें इंग्लिश इतनी जरूरत नहीं है। हमें तो वो बंदा चाहिए जो कम्युनिकेट कर पाए वर्कर को। हम अगर आपके आईटी इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं तो हमें वहाँ इंग्लिश की इतनी बहुत जरूरत नहीं है। आपको तो टेक्निकली आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपके टूल्स यूज होने चाहिए। कम्युनिकेशन कैन बी डेवलप लेटर ऑन ऑल्सो। आजकल आईटी में जो है कम्युनिकेशन की क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना। लेकिन वो क्या देखते हैं, आपकी टेक्निकल स्किल कितनी अच्छी है। ईच सेक्टर हैज गॉट अ डिफरेंट स्किल सेट। वो चाहते हैं, उनको स्किल सेट चाहिए। लेकिन बेसिक चीज है, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइदर यू आर replying in English or Hindi or English Hindi both, that is doesn't matter. How confidently you are expressing yourself. Confidence देखते हैं ना कि आपका आउटलुक और वो सब। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक ही क्वेश्चन से पता चल जाता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो जाते हैं जहाँ पे आप, और एज ए इंटरव्यूअर मेरा जो प्रिंसिपल था, मैंने जो इंटरव्यूज किए हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो यह था कि मैं कभी भी इंटरव्यू देने वाले से कभी भी वो क्वेश्चन नहीं पूछता था जो उसको नहीं आता हो। मैं हमेशा ट्राई करता था कि क्वेश्चन वो पूछूं जिसमें वो आता हो और उसका डीप में एसेस किया जाए। एज ए इंटरव्यूअर मेरा ये हमेशा रहा कि मैं कभी भी अनकंफर्टेबल अपने सामने वाले बच्चे को नहीं होने दिया। आई ऑलवेज ट्राई टू गेट वॉट एवर बेस्ट ही नोज अबाउट। यू शुड डीप डाइव ऑन दिस एरिया रादर देन टू शो कि जिसको नहीं आता है फिर उसको आप निगेटिव आप खुद ही बना देते हैं। उसकी पर्सनालिटी हमें समझ में नहीं आती, उसका स्किल नहीं समझ में आता है। दैट इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मी एंड माई को इंटरव्यूअर, जो ऑपरेशंस और टेक्निकल साइड के होते थे कि सर आप तो वही पूछ रहे हो जिसको आता है,
मैंने कहा दिस इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट, व्हाई वी शुड ऑल दिस, एवरीबॉडी नो, सभी को सब कुछ थोड़ी आता है। तो फर्स्ट एज ए इंटरव्यूअर आई मेक इंटरव्यू कंफर्टेबल, उसको पहले मैं कंफर्ट जोन में लेके आता हूँ, और कंफर्ट जोन में लाने के बाद फिर मैं उससे वो एरिया पूछता हूँ जिसमें उसने जिसका नॉलेज रखता है, ठीक है ना। दिस इज ऑल, दिस इज माई एक्सपीरियंस। देयर आर पीपल दो जो वहाँ जाएंगे जहाँ पे कि जिसको नहीं आता हो वो उसमें, तो उससे आप यू कैन नॉट जज राइट कैंडिडेट, ठीक है ना। तो दिस इज माई एक्सपीरियंस। और कोई क्वेश्चन? So can we become part of QCFI? Always QCFI के बारे में I will just explain what is QCFI. Quality Circle Forum of India is a non-profit organization, non-political organization. We have got around 35 chapters across India, and our job is to propagate and implement, hand-holding in the implementing of quality concept. What is quality concept? क्वालिटी कंसेप्ट आपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सुना होगा, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस TPM, 6 सिग्मा सुना होगा, 5S ऑल जापानीज टेक्निक्स, 5S कानबान, SMED, पोकायोके, देयर आर वेरियस जापानीज concepts are there. So we try to train the people on this quality concept, and if organization is ready to implement all these concepts, then we hand holding through our faculties, through our experts from different sectors. So this is, and how we did it, we around 600 plus organization are permanent member, and 12,000 plus member are employees are our permanent member, and in 35 chapters, whatever you name it in India, all organizations are our member. So what we do, we train them, implement, and like I told you, they form a quality circle. Quality circle means it's a group of 4, 5, 6 people. They identify the problem. Our management gives them a problem. They apply 12 steps approach and 5 step DMAC जिसको बोलते हैं, वो अप्लाई करके वही टीम जो है, वर्क रिलेटेड टीम जो है, वो आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम, उसकी डेफिनेशन बनाती है, उसके बाद उसको एनालिसिस करती है उस प्रॉब्लम का, उसके बाद उसके प्रोबेबल सोल्यूशन निकालती है, रूट कॉज पे जाती है, रूट कॉज के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के पहले वो अपने जो फोर्सिंग रेजिस्टेंस होते हैं फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, उससे बात करते हैं, उसके बाद फिर वो फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन के बाद उसमें देखते हैं कि इंटेंजिबल बेनिफिट से क्या हुआ और टेंजिबल बेनिफिट क्या हुआ, तो उसको एक केस स्टडी के फॉर्म में बनाते हैं, एंड दे प्रेजेंट टू द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट उनको जो है रिकॉग्नाइज करता है, देन दे सेंड देम फॉर द चैप्टर कन्वेंशन। चैप्टर कन्वेंशन में जिनको गोल्ड मिलता है वो दे आर एलिजिबल फॉर नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन में जिनको गोल्ड मिलता है दे एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल कन्वेंशन। So this is the process of getting your student to develop their problem solving skill. So they apply all creativity, innovative solution they bring, and they can present to your management, and the management can nominate for the chapter convention. Then chapter convention में इसका performance अच्छा है तो national convention, और national convention अच्छा है तो उनको international. One small employees, one shop floor employees can be recognized at international level. So this is the way of recognizing, developing, and motivating employees. Likewise, student also can form. अभी हमने 27th of September को हमने विक्रांत यूनिवर्सिटी में इस बार ग्वालियर चैप्टर का कन्वेंशन, ग्वालियर चैप्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव चैप्टर जो एजुकेशन में क्वालिटी सर्कल की बात कर रहा है, और अराउंड 35 टीम फ्रॉम स्कूल्स, और स्कूल्स में नॉट केवल स्टूडेंट बल्कि उनके टीचर्स ने भी 3 टीम फॉर्म की थी, उन्होंने भी आके वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया
अपनी केस स्टडी शेयर की। विक्रांत यूनिवर्सिटी की टीम हमने 4 टीम 2 महीने के अंदर बना के उनको हमने प्रेजेंटेशन करवाया, और इसके अलावा कंपनीज की टीम थी, तो दे हैव प्रेजेंटेड देयर केस स्टडी। और उस केस स्टडी पे जिनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, गोल्ड वाले दे आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर नेशनल कन्वेंशन विच इज गोइंग टू हेल्ड इन 19 to 22 December in GL Bajaj College in Greater Noida. Around 15,000 people will be participating in this convention, or 3,000 case studies will be presented by schools, college and industries people. So this is the biggest forum in India where you can collaborate with education and industries, and you can see various kind of problems, how they have solved innovatively and creatively. This is the biggest forum. Nowhere. Tata की सर बहुत सी टीम आती है, all whatever big name you can take it, they're all participating in this convention. यहाँ पे भी टाटा मोटर्स लखनऊ से टीम आई थी, केएल की टीम आई थी, और BHEL की टीम आई थी, तो they participate here also. So this is the best forum. Only prerequisite to become a participate in QCFI is you have to become a member of this QCFI. एक तो ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है आपका मेंबर हमारा. स्टूडेंट के लिए you have to take a lifetime membership that is around 2,300 and lifetime, but you will get all the information. You will be getting good concession for participating in the convention, and you can see all best part of the industry in this convention. So this is the biggest advantage for all the students to become a member. You get lot of stuff, you will get lot of opportunity to participate, and you can also participate in national, international level. So Pawan ji, you can take a lead here. अपन NEP की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री रिलेवेंट की बात है. This is the forum where you can get advantage of all, and also involve your faculty member. Okay, unless faculty is developed, they can be developed. ठीक है ना? So thank you very much, and thank you very much Pawan ji for inviting me, and I am available here. I am available in Godrej. Anytime you can connect with me. I would love to discuss and clarify and brush your mind. ठीक है ना? आपका माइंड ब्रशिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत आगे की सोच लेते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमें नहीं मालूम होगी. इट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड लेट मी अश्योर यू, यू आर ऑल टैलेंटेड गाइज, बट यू आर नॉट गेट राइट डायरेक्शन to choose the right field. That I can help you out. Okay, thank you very much. Thank you so much, sir, for the wonderful session. May I request Director, sir, Professor Jiten Singh Kirar, sir, and Professor Arvind Singh Tomar, sir, for the memento presentation ceremony. Now I would like to call Professor Varun Yadav, sir, from Management Department to deliver the vote of thanks. Before I start my vote of thanks, I have a word for my students and participants. So we were discussing about books in the morning session. I believe such esteemed, learned people are a library in themselves. So as we conclude today's session,
I take this opportunity to express our heartfelt gratitude. Our sincere thanks to Shri Avinash Mishra sir, Vice President Godrej Consumer Private Limited, for sharing such insightful perspectives. Sir, your talk truly inspired us. A special word of appreciation for our guiding force, Dr. Pawan Agrawal sir, Director SRIIT, whose vision and leadership make every learning initiative meaningful and impactful. Thank you so much, sir. Heartfelt thanks to the organizing team, technical staff, and everyone working behind the scenes quietly and making everything seem successful and warm. And finally, thank you to all the participants for your enthusiastic involvement. Let's carry forward the learning and continue to nurture a culture of quality in all that we do. Thank you and have a good day. Thank you very much for listening. I hope you will get. राहुल इसके अनुराग के साथ ये